I spent last 24 hours building this website on Claude Code. What actually surprised me was not the website itself, but this CMS system from which you can edit each and everything without touching single line of code. You can simply update colors, save it, and it will reflect throughout the whole website, taking this website to the next level. Same way, you can update content on the website and it will just reflect within 1 second. By the way, if you are new to the channel, I am Nyaiku Sohab and I have been designing and developing websites from past 10 years. I'm a Fiverr top rated seller and vetted pro. कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मैंने वेबसाइट वर्डप्रेस पर क्रिएट की है एंड फ्रॉम द सेम वेबसाइट आई गॉट अनदर पोटेंशियल क्लाइंट जिसको इस तरीके की वेबसाइट चाहिए थी। तो इस बार मैंने सोचा कि इसी वेबसाइट को हम क्लाउड कोड में बनाते हैं विद अ फुल प्रॉपर एडिटेबल CMS सिस्टम। So let us actually get started with the homepage designs and then we will move on to making the CMS system. So using our client content, we will first try to redesign the homepage and I uploaded the file and this is the simple prompt I gave to Claude AI. अगर आप देख पाओ ये मैंने खुद मैन्युअली एडिट किया जो मुझे लगा कि this should be the criteria for this new website as per the content. This is the first design and it surely is great. The hero section is unique and the mark you. कमिंग टू द टाइमलाइन, अगर आप चेक करोगे प्रॉम्प्ट में मैंने एग्जैक्टली दिया था कि एस शेप में हमें एक टाइमलाइन चाहिए एंड टू बी ऑनेस्ट इट फॉलोड इट परफेक्टली एंड दिस लुक्स प्रिटी ऑसम। एंड ये सेक्शन भी फिक्स्ड हो गया एंड ओवरऑल अदर सेक्शंस आर जस्ट नॉर्मल एंड दैट्स द रीजन आई गेव इट अनदर प्रॉम्प्ट इन ऑर्डर टू जनरेट अनदर वर्जन। तो आई टोल्ड इट कि जो अवार्ड्स वेबसाइट हैं या बाकी बेटर वेबसाइट्स हैं, फ्रेमर टेम्पलेट्स, वेब फ्लो टेम्पलेट्स, वो आप चेक करो एंड जस्ट रिफाइन समथिंग एंड गिव मी अ बेटर डिज़ाइन। सो दो वर्जन्स मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने जनरेट किए एंड इन दैट आई आस्क्ड इट कि टाइमलाइन आप रख दो, ये सही है एंड अदर थिंग्स चेंज कर दो। सो ये सेक्शन हमारा न्यू आ गया, ये एक एडिशन हो गया एंड this is just simple, it's not much appealing. So ये horizontal timeline इसने ऐड कर दी and this version was not that great but still it did some additions and you can see थर्ड वर्जन हमारा ये आता है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा वर्जन अच्छा लगा एंड व्हाट यू फील अबाउट माय GP कोटिंग वेबसाइट एंड दीज थ्री वर्जन्स। यू कैन रेट देम एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन वेबसाइट आपको कितनी बेटर लगी एंड दिस इज आवर थर्ड डिज़ाइन एंड यू कैन सी नंबर्स आर लुकिंग गुड एंड स्टेप्स को इसने चेंज कर दिया टू द हॉरिजेंटल टाइमलाइन विच एक्चुअली लुक्स गुड एंड वर्क्स वेल। दिस सेक्शन ऑल्सो फ्लोज वेल एंड ये भी एक क्लीन वर्जन आ रहा है इसका, फिक्स्ड टेक्स्ट एंड देन द स्टेप्स एंड दिस लुक्स pretty good and in terms of UI UX it flows very well and looks clean. इसमें font थोड़ा additional आ गया है but overall you can see yeah this animation. तो ये वर्जन भी ऑलमोस्ट काफ़ी सही है। नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट दैट इज़ आवर CMS सिस्टम। CMS सिस्टम बनाने के लिए सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे आप एक सिंपल CMS सिस्टम दे दो सो दैट आई कैन जस्ट अपलोड इट। इट स्टार्टेड क्रिएटिंग द फाइल्स एंड वी अगेन हिट द लिमिट। So I would have to actually wait because I don't think I can add more money into this for additional usage. So we had already hit the limit at 10:30 p.m. After that, I asked it to complete the build, but again limit hit हो गई and we had to wait again. जो इसने अब फाइल्स दी थी, I tried to upload those, but due to the incomplete build, it gave the error. लेकिन फिर से as I said, I had to wait for 10:30 a.m. in order to complete the build. तो अल्टीमेटली हमें फाइल्स मिल गई है। वी विल जस्ट अपलोड दीज फाइल्स टू द होस्टिंगर एंड वी विल सी हाउ दिस गोज। So I am into my host and this is the empty website I added and we will go into the dashboard, then into the file manager and we will upload the folder in here. Upload and this is our folder that is build flow CMS. We will move the files out
And now we will go to the website, and here it is. So we will have to set the password. We'll set something. The build is complete, and we will have to delete the install.php file, which is actually here. We can simply delete this and log into the admin panel. So here is the admin panel, and earlier what issue we had got, that is now fixed. So we had an issue कि जनरल सेटिंग्स में तो ये टेक्स्ट आ रहा था, बट हीरो सेक्शन ट्रस्ट बार इट वाज मोस्ट ऑफ द आइटम्स वेयर एम्प्टी. सो अगर मैं अब होम पेज पे जाऊंगा, दिस इज आवर वेबसाइट. तो डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है. ये वर्जन हमने CMS सिस्टम इसका बना दिया है, बिकॉज द थर्ड वर्जन आई शोड यू was also good, to be honest. My choice is the third version was the best. You can let me know which is your choice among the three builds. But that was actually done in the chat system, and वो भी मैंने Netlify पर host किया, and you can by side see this website, and this is just superb, to be honest. And हम अब ट्राई करेंगे कि टेक्स्ट एडिट करें, फिर चेंजेस सेव करें, एंड होपफुली we will be able to complete this. So we will just try to upload this and save. So section saved successfully. We will now check in the hero content if we are able to see the update. So yeah, it is updating, guys. It is updating. But to be honest, बहुत ही खुशी हो रही है. I don't know why, but simply अच्छा लग रहा है, because I have been doing this from last 24 hours, hitting the limit, trying to fix the things, and we are actually going good. We will just try to add here 100% transparent pricing, save this again, and yeah, here it is. So this is actually updating fine, and we can just update the pricing to $900, save it, and stat one, say let us see, add another stat, person trusted. So we have to put the value only and trusted and save. ये तो add हो गया है, you can see, but the counters are not working. We will have to see about it, but website is actually updating, and here is the trust bar, text mark you. Let's see if we add another and if this is causing the issue. And it has styles also. That looks great. And we will save it and see if this text gets added. The mark is working now. The counters were not working. We have added full protection here. So here you can see this did get added, and इसने बाकी भी items remove किए. We can put it as outline also and update it. But honestly, it is updating well, and I think I'm quite happy with the changes. Counter timeline work कर रहा है. So let us try to see if we can add something in timeline, how this works. If we add sixth step, just save it. And yeah, timeline is also updating. But to be honest, I think everything is going well. Counters here are working, but it now is going to 0. So there is counter issue in most of these top counters, bottom counters. So we will have to see about that. But overall, I feel everything is updating well. There were not much images into this, but we will try to see if we can update the image for Daniel Harrison, that is founder here, and we will try to upload some different image. We'll upload this image, save it, and see if this updates. The image got updated here. Size छोटा है इसमें, but I guess we can change this via CSS actually. And just to see, yeah, it will update with the CSS. अगर हम CSS update करते हैं तो it will surely come good.
एंड हम इजीली इमेजेस अपडेट कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट. बेसिकली इस वर्जन में इमेजेस तो थी नहीं, एंड इट वाज मोर ऑफ like icons and illustrations, but overall the CMS system, you can again see it why it is just superb to be honest. So this video finally comes to an end. We hit the limits. It took us bit of time, but honestly the output was great and dil khush ho gaya. So honestly at the end I would say $20 a month, it is surely worth it. बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्लॉड से एक वेबसाइट ऑलरेडी सबमिट की थी. इट वॉज अ लैंडिंग पेज, एंड टू बी ऑनेस्ट जो मैंने उससे कमाया है it actually pays for this plan for the full year. So even if I might have to go for the $100 plan, that is the only thing I am facing an issue कि बीच में कोई प्लान नहीं है. आई फील कि बीच में $50 प्लान होना चाहिए था, बिकॉज $100 इज समथिंग मच मोर. अगर यूज़ नहीं होगा तो फिर बंदे को ऐसा होगा कि भाई आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट, बट ओवरऑल रिजल्ट्स आर टॉप नॉच. सो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम भी गया है, बट ऑनेस्टली आई वॉज हैप्पी एट द एंड. एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, do subscribe to the channel and also let me know in the comments your thoughts about the Claude AI and this CMS system. We'll meet you in the next video. Till then, have a good time.